डिक्टेटर मिले हैं, वो डिक्टेटर भी बड़े 2 नंबर मिले हैं। 1 नंबर डिक्टेटर होता तो क्या करता? 1 नंबर डिक्टेटर होता तो वो कहता मैं डिक्टेटर हूँ, मैं 5 साल के लिए आया हूँ, मैंने आपके सारे इदारे ठीक करने हैं, उसके बाद मैं इलेक्शन करवा दूंगा। सुनिए मेरी बात, वो 2 नंबर डिक्टेटर कहता है नहीं मैं जमहूरी हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, पहले अदालतों का बड़ा करता है, इलेक्शन फ्रॉडलेंट करता है, असेंबली डमी ले आता है, प्राइम मिनिस्टर डमी ले आता है, उससे सारे अदारे भी खत्म हो जाते हैं और सारे क्रिमिनल्स को अपने साथ मिला लेता है। इस मुल्क के अंदर नेचुरल लीडरशिप इसलिए डेवलप नहीं हो सकी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो भी पावर स्ट्रक्चर है वो उन लोगों को ऊपर लेके आता है जो कंट्रोल हो सके। जो लीडर होता है वो कभी कंट्रोल नहीं होता, वो अपने मंशूर से कंट्रोल होता है। तो यहाँ नेचुरल लीडरशिप को ऊपर आने नहीं देते। मसला क्या आज पाकिस्तान का, जो पावर में आता है, जो जुडिशरी है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने बीच में, यानी कि जुडिशरी जो है वो बजाय चेक करने के लिए पावर को, वो पावर का हिस्सा बन जाती है। इधर से सारी खराबी होती है नीचे थाने तक। जब तक पावर स्ट्रक्चर को चेक और बैलेंस नहीं आएगा इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम से ऊपर से, तब तक नीचे थाने तक प्रॉब्लम रहेंगे। मैं आज एक शहरी हूँ, मेरा हुकूमत या जो भी पावर में बैठा हुआ है, फौजी है या एक रूलिंग पार्टी का एमएनए है या मिनिस्टर है, अगर मेरा उससे मसला होता है तो मैं किधर जाऊंगा? अगर अदालतें आजाद होंगी तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। देखिए एस्टेब्लिशमेंट 2 चीजें करती है। हर हल्के के अंदर मुजरिम पेशा लोग होते हैं। जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा जिस तरफ एस्टेब्लिशमेंट उनको सिग्नल करती है उधर जाते हैं, इसलिए कि उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, उनको खौफ होता है थाने से। तो जब उनको पता चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक कैंडिडेट के साथ खड़ी होगी है तो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। मुजरिम पेशा लोगों की तहफ़्फ़ुज़ होता है गवर्नमेंट के साथ। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। हमारा जो सारा निजाम है वो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ एजेंसीज या पार्टीज को चलने नहीं दिया। Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan Uncensored. Today is 14th of August 2024. Last night, what happened in Liberty Chalk in Lahore, I was amazed. That's no Pakistan. No way by any means that should be Pakistan. Okay, that looked like to me we're in Indian occupied Kashmir, Gaza, police brutality, just for carrying a Pakistani flag. Absolutely no need for it. Tomorrow कल इसी पुलिस ने कहना, इसी फौज ने कहना अवाम साढ़े नाल, जिस तरह उसे डंडे मारते पे अपनी अवाम थे। Then I seen a police officer kick a woman. She must have been about 60. Absolutely disgusting. There's nothing more I can see to this. Absolutely disgusting. One thing I can say, the Pakistani police किसी ने नहीं छड़िया। Anybody who had anything to do with Pakistan yesterday got battered, got bullied, got battened by the police. But I got to give it to the Pakistan population. You guys proved to the army, to the police, to the government sitting there, the fascist government, illegal government, that people are asking for independence. Yesterday was meant to be Independence Day. By the look of it, it was like they're coming out to get freedom. You know what I mean? It was really, really disgusting. Then, if you look in Pakistan, the amount of PTI flag was there, unbelievable. Liberty Chalk, before all this happened, 1 in the afternoon, you had prison vans, you had police escorts, you name it, they had it. It was like a big fortress of the police ready to attack the public. Anybody visiting Pakistan would have thought, oh, police protection for the public, maybe it was Independence Day. Little did they know, they're worse than the Israelis, they're worse than the Indians, because they're hitting not their own people, they're hitting the minority. Pakistan, they were hitting the majority over what? The minority that they have in the government. Shahbaz Sharif, udhi to rukad hi nahi. Maryam Nawaz, only word for her, she's a dog. Alright, she has basically hijacked Pakistan's system, her and her dad. Alright, so I personally believe Pakistani should come out on the 30th of August and claim their freedom, just like Bangladesh, just like Sri Lanka. If anybody's sitting here thinking I'm inciting violence, absolutely not. What I'm trying to say to those people, you deserve freedom, you deserve independence, you need your independence, okay? The so-called Azadi, it wasn't Azadi. If I put that video clip in front of anybody and I'm going to say, do you think that protest accumulates freedom? They're going to say, that's no freedom. That's barbaric. They're beating their own people for what? Just again, the government's backhand to say, well done, well done.
Now what I'm going to do, I'm going to show you a video, okay, of this is today 14th of August in Lahore outside the Parliament of Punjab, okay. Now it's absolutely disgusting how they carry those flags away, and me telling you is a different story. I'm going to show you a video clip that was taken by the public and is all over online, so I'm going to share it with you to have a wee look, okay. Have a wee look at this. Now, did you see the bunch of flags they carrying? I would like to ask them, इन्हें की करना झंडियां नाल? जितना शरीफ फैमिली है ना, उन्होंने कफन बनाए ना झंडियां नाल. I'm telling you, when they all die, from the Pakistan people put a flag over their body, because the amount of flags these are taking of these people, this is not an illegal flag. That's a Pakistan national flag. Then you got the largest party in Pakistan. These are drilling their flags about. Absolutely unacceptable. I would just like to make something clear. Police brutality will happen for so long, you know. When public give up, I'm telling you, they will drag you out your police stations, they will drag you out your houses, and then you'll say, "Ke sanu kutte pehri." Believe me, you are asking for that. Every time I see what you are doing, I'm disgusted here, okay. I'm going to show you a clip now. I don't know how they managed to do this, okay. Obviously, the system is partially involved in this, so the system is giving them a free hand to go do this, okay. I want you to have a look at this, okay, what's happened here. मर्दों किया और मैंने खुद सुना, एक ने कहा इसके सारे कपड़े फाड़ दो. मर्दों ने, वो पुलिस वालों ने उस दूसरे को कह रहे हैं इसके कपड़े फाड़ दो. ये पुलिस वाले ने क्या? पुलिस वाले ने दूसरे को कहा और मुझे खींच रहे थे. मैंने कहा खबरदार, मुझे किसी ने कोई लेके गया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया. ये मैं मेरे टैक्सों पर ये पलने वाले कुत्ते मुझे आगे पकड़ेंगे. बदतमीज लोग. मैं खुद भाग के आया हूँ रोड के ऊपर. तो इनको किसी, हाँ जी, झंडा हाथ में झंडा था. मैंने ये सुना, उन्होंने कहा इनको कि इनके कपड़े पड़े इसलिए उन्होंने शर्ट खींची है. ये तो हमारे मुल्क का हाल. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਵਾਜਾ ਆਸਫ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ. I would ask him today, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾ? ਤੁਸੀਂ 50-year-old woman, you're telling her you're going to wrap her clothes. Absolutely disgusting. That's not Pakistan. I'm telling you, that is not Pakistan. ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਇਦੀ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਈ ਸੀ. ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ. 110% I agree with that kid. Okay, that kid's got bigger brain than mine to even come out with this word. Okay, we are still in slavery in Pakistan, the slavery of the barbaric system. The whole system is fascist. If that happened by Imran Khan, the whole world media would have been screaming, look what's happening in Pakistan. Right now what's happening in Pakistan is part of the Western civilization system. I'll tell you why. Tomorrow they're going to get air bases, they're going to bomb Afghanistan, and they're going to come back to where I was. Today we got the same president who gave them a free hand in 2007 to say, jinne drone marne maro, asi bas, we'll ignore it. And we'll just keep saying on the TV, but only to the TV.
These are the same people back in power. Personal opinion, I think they should be all dragged out their houses. They should be dragged out of the fucking system. Pakistan needs a revamp, and there's only one way to revamp is to get all these clowns out of the offices. I can't understand how they come about to say to a 50-year-old woman, we're going to rip your clothes. Why? She's standing in Liberty Chalk with a Pakistan flag underneath PTI flag. Just cause having a flag in your hand doesn't give anybody the right to strip them of their clothes. But if you're in Pakistan, system's different, है ना? So ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲlallah ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah. I've read Quran in English many times. Asim Munir, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ. I tell you, मैं भी गुनहगार बंदा. I'm not saying मैं फरिश्ता हूँ, but let me tell you something. Asim Munir, तू तो हाफिज़ कुरान है, कुरान दा मुहाफिज़ है ना. मेरी गल याद रखी, मेरा भरा the cover's going to grab a hold of you just like the mother gives a hug, ना. The cover's going to hug you and break every bone in your body. Because why? See, zulm है ना, zulm अल्लाह ताला नू ये चीज़ मंजूर नहीं है कि तुसी किसी गरीब ते जुल्म करो, ठीक है ना. Remember that. तुसी गरीब ते जुल्म नहीं किता. You have destroyed him. They can't feed themselves. They can't get electricity in their houses. There's about 50 types of different taxes on your bills. Alright? And look at the system. नवे डाले आ रहे हैं, नवे लैंड क्रूजर आ रहे हैं. Alright? Anything you say, you do is absolutely bullshit in English. Okay? Because it means nothing now. All of you are fascists, money launderers, part of the criminality. You know what they say now? If I was to hand somebody a gun and that guy shot somebody, I'm an accomplice of that crime. See, right now, every single one of you are an accomplice of this government. जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान विच, आर्मी जनरल्स उतने ही जिम्मेदार हैं. पुलिस चीफ नहीं, पुलिस का हर एक बंदा उतना ही रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ. ਸੀ ਆ ਹੋਪ ਜਿਤਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਾਈਟ ਹੋਣ. You know they say snakes and scorpions come into graves. I swear to God, I pray to Allah that your graves are full of scorpions, full of snakes. Why? See what you are doing to these people? Absolutely unacceptable. Not acceptable in this day and age. Okay? And if you think you are going to call everybody dehshatgard because internet te baithe hain, I tell you, DGISI, मैं यूके च बैठा, मेरा पता चाहिदा, मैनू मैसेज भेज, मैं तेनू अपना पता ते अपना नाम देंदा. I belong to Azad Jammu Kashmir, Azad Kashmir. Okay? I tell you, ਤੁਸੀਂ yesterday ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ. ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜਰੇ ਸਨ. ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਟ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ you have no right in Kashmir, Azad Kashmir, because as a outside territory. Ranger ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਸੀ? So I'll be honest with you, a military, a Pakistan armed forces, any armed forces in the world are strong when they have a public backing. Personally, you have lost all your public backing. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੋ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੋਬਡੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ DGISI ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ. ਕਿਉਂ? ਫਕਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਲੈ ਸਕਦੀ. ਬਟ it's all happening, you know. And what I'm going to do, I'm going to look at, I'll be honest with you, I've kind of slowed down putting vlogs up. Why? I'm distressed. I get too hot when I see this. How can I report my own people to the world कि ਅਸੀਂ इतने नंगे हो रहे हैं आपस ਵਿੱਚ ना? शर्म आ जाती है मैनू. मैं vlog नहीं सी बनाता, पर ਜਦੋਂ मैं सुनिया ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ,
खुदा दी कसमें मैं कहना अल्लाह तुहाडे ते हर जुल्म ना दा बदला ले तेरे कोलों. I swear, I pray to Allah that every single type of evil thing you are doing, you just pay it tenfold back. Okay? Because why? Remember, गरीब दी आवाज़ 7 आसमानां तक पहुँचती है, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ GHQ तक रिसर्व जाती है. याद रखें, जिस बंदे की आवाज़ अल्लाह ताला को चलेगी ना, I tell you right now, you are a loser in this world, you are a loser in the next world. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ, you are a 40-50-year-old man, you are not going to live more than 20-30 years. Then you are going in that grave. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ. But guess what? A little too late. Okay? I promise, I hope even the Farishte punish you. Okay? See, that grave becomes a tip of hell for you, not a bed of heaven. ठीक है ना? और देखो 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने अपनी माँ ਨੂੰ लिवर ਦਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਈ. ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ. Okay? Why? Because people can see what you are doing. The media may be censored. Every single person in Pakistan is carrying a phone, and each phone is giving you an image of yours to the world कि तुसी की कर रहे हो पाकिस्तान विच. And Maryam Nawaz, your firewall will not protect you, because you will be burning in fire, inshallah. Okay? Nani 420, you will come to your senses very soon. ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਮਤ ਪਾਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਯੂ ਇਜ਼ ਬਲੀਵਰ ਯੂ ਡੋਂਟ. ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ. ਮਾਲ ਰੋਡ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ. ਵਾਟ ਇਜ਼ that show you? You guys will leave Pakistan very soon. See, we come to the UK. I don't know about anybody else. I'm going to file a petition to remove you. Be honest with you. I'll get a petition signed. Okay, the Sharif family be removed from this country. Why? They are war criminals. They have done so much to their people that they should not be in this country. In this country, riots हुए ना पिछले 4-5 दिन. Example, आज riot हुई, कल उन्होंने आज इन्हों फरिया, सुबह उन्होंने सजावां भी हो गईयां. 36 month फेर गए. एक बंदे ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 69, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਸੀ. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਨਾ. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੈਫਿਊਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੰਗਰੀ ਆ ਹੋਮ, ਯੂ ਨੋ ਕੋ ਮਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਬਲਿਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਯੂ walking with him, you're an accomplice with them. So that Baba had a danda, they put the library on fire, they burnt the food bank down. ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖ 69, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ. ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਉਹਨੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, 36 months. ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਵਿਫਟ ਜਸਟਿਸ. ਇੱਦਾਂ 400 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿਦਨ ਅ ਵੀਕ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਲੋਨ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ 9 ਮਈ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ. ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ CCTV? UK 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ CCTV ਮੀਡੀਆ ਇਮੇਜਿਸ ਸਭ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਦਨ ਨਾਈਟਸ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ. ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਡਸ ਅ ਫੁੱਲ ਬਰਸ਼ ਓਵਰ, ਫੁੱਲ ਕਲੀਨ. ਓਕੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ. ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ. I can see it. They want freedom, but they're not getting freedom. May Allah give them that freedom because they deserve that. Okay?
And only guy that can lead Pakistan out of this distress is Imran Ahmad Khan Niazi. On that bombshell, good day. दुनिया भर में आसिफ जरदारी हो सकता है सबके पास, नवाज शरीफ हो सकता है, पर इमरान खान नहीं है दुनिया भर के किसी भी मॉडल में जो असेंबलियां छोड़ दे, असेंबली से रिजाइन कर दे, जो सूबों में हुकूमतें खत्म कर दे, जो जेल में डट के खड़ा हो जाए। मैंने उनका अटक वाली जेल का एक फोटो देखा, वो लेटा हुआ है टांग पे टांग और किताब पढ़ रहा है उस फोटो में जो मैंने देखा। हाउ मच ही वाज फ्रेश इन जेल यार, वो एक यूनिक सा सियासी लीडर है। La ilaha illallah, and we will fight